Hello friends, good evening all. Welcome back to another video. In this video we are going to learn how we can memorize vocabs. Actually vocabs play a very important role in your daily life. If you want to improve your spoken English, then you have to memorize at least 5 words every day. Actually, if you don't have vocabs, then you can't express yourself properly. I have observed this thing that if I have deficiency of vocabulary, so then I can't be able to speak English properly. So this technique is really important to know how you can improve your vocabulary. Actually, you have to purchase a notebook. If you have notebooks, then you can use this. Then you have to collect 5 words every day. Then same words have to read aloud first. Okay, then same words have to read at least 3 or 5 times. But if you are trying to read 5 words just like that, like cut, put, no, not like that. You have to write sentences in your notebook. As you can see that the first word meaning is early. This word has been taken from a 1000 plus English vocabulary book by the author name is, as you know, that Adit sir is a spoken English guru. So this was has been taken from this book. Actually, earthly is an adjective. The Hindi meaning. Actually, my native language is Bengali, so that's why I have written the meaning of this word in Bengali. Actually, sangsharik, Bengali. In Bengali, it's called sangsharik. Actually, I have checked the Hindi meaning of this word. It's same, sangsharik. So actually, क्या पता है आपको हिंदी और बंगाली में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिमिलर ही है. ठीक है, तो इसलिए मैं बंगाली में थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिखता हूँ. कोशिश तो नहीं, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं एक्चुअली मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आपका जो नेटिव लैंग्वेज है उस वहाँ पे आपको लिखना होगा सांसारिक, जो मीनिंग होगा, वर्ड का मीनिंग होगा. देन यू कैन ऑल्सो राइट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. एज यू कैन सी earthly, then same words you have to use in sentences. How you can make sentences using this word? Those people who quit the world and become hermit, they usually sacrifice all the earthly things. ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड में लाना होगा. कोई भी वर्ड आप पढ़ रहे हो, जैसे उसका बेस फॉर्म पढ़ रहे हो, उसका जो पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ईएस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो हाँ गाइस, तो मैं बोल रहा था कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दिन तक वर्ड को याद रखना है ना, तो आपको इस तरीके से याद रखना होगा, सेंटेंस के थ्रू याद रखना होगा. ठीक है, ये देखिए, आर्टली ये हो गया मेरा फर्स्ट वर्ड. नेगोशिएट ये हो गया सेकंड वर्ड. जेलस ये हो गया थर्ड वर्ड. इरिटेट ये हो गया फोर्थ वर्ड. और हिपोक्रेट ये हो गया फिफ्थ वर्ड. तो आज का जो दिन का काम, वो काम ख़त्म हो गया आपके लिए. ठीक है, 5 वोकैब हो गया है. 5 वोकैब को आपको दिन में और रात में सोने से पहले आपको याद करना है. जो सेंटेंस आप बनाया है ना, जो सेंटेंस यहाँ पे आपने लिखा है, उस सेंटेंस को बार बार आपको जहन में आपको बार बार याद करना है उस सेंटेंस को. ये कौन सा सेंटेंस मैंने इस वर्ड के अर्थ के नीचे मैंने कौन सा सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को आपको बार बार रिकॉल करना होगा. ठीक है, फिर जाके आपको वोकैब आपको पकड़ में आ जाएगा गाइस. 5 करके वोकैब आपको हर रोज़ याद करना है. देखिए, मैं ये नोटबुक ही इसलिए बना रहा हूँ कि गाइस एवरी डे आई विल लर्न 5 वोकैबुलरीज टू इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश. गाइस, ये आप कर लो गाइस, मानो कि आपके सारे के सारे काम हो जाएगा गाइस. वोकैबुलरी में आप मास्टर हो जाओगे. एक्चुअली स्पोकन में आपको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा. तो गाइस, ये था आज का वीडियो. प्लीज़ try to subscribe this channel and try to share this video with your friends, with your parents, so that I can make more videos. Actually, please do subscribe this channel guys. As I can see that you are watching my videos, but you are not pressing the like button. So do this and please inspire me. Thank you guys. Thank you so much. Bye bye.